एक ख्वाहिश है कुछ कर दिखाने की, एक ख्वाब है दुनिया बदलने का. A dream to make it big, a dream to change the world. Let's talk about the Silicon Dreams with me, RJ Shara. Hello, Namaste, Adab. You're tuned in to Radio Zindagi 1170 AM and you're listening to the first ever episode of The Silicon Dreams. मैं हूँ आपकी होस्ट शारा और हम और आप मिलेंगे हर मंडे 3:30 PM से लेकर 4 PM तक to talk about our Silicon Dreams. Now, I don't want to generalize, but what is that one thing that most people in the valley dream about? It's the desire to make it big, really big. आखिर हम सबके बड़े बड़े ख्वाब है, बड़ी ख्वाहिशें है ना? And guess what? The valley for a long period of time has blessed those who dream big. We have had 40 plus unicorns born in the Bay Area in our very own valley just last year. तो हर सोमवार शाम के 3:30 से लेकर 4 बजे तक हम और आप बातें करेंगे इन्हीं ख्वाबों की. We won't just talk about dreaming, but we'll also talk about how to turn your dreams into reality. On the Silicon Dreams, you and I will talk about innovation, entrepreneurship, and all the things that impact innovators and entrepreneurs. So what are these things that impact innovators and entrepreneurs? After all, we are in the valley where every other person is dreaming about setting up a startup and making it big. लेकिन एक ही सपना बार बार देखकर वो सपना हकीकत में नहीं बदलता. आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पूरी कायनात का साथ लगता है. So what are these other things that entrepreneurs have to think about? Are you thinking about money, honey? If you are, then you are on the right track. On this show, we will talk about investments in startups and enterprises. We'll talk about angel investments, venture capitalists, we'll talk about corporate investments. But besides money and capital, और भी बहुत सारी चीजें हमें consider करनी पड़ती है when you are running a business or your own startup or even a well-established company. And those are things like policies, politics, law and order, and you also have to keep tabs on things like immigration because many of the Valley startups have founders or co-founders who are immigrants. आप सुन रहे हैं Radio Zindagi 1170 AM with your host Shara, and let's open the door to the Silicon Dreams with our next song. तारे ज़मीन पर मूवी का ये गाना written by Prasoon Joshi, music by our favorite trio Shankar Ehsaan Loy, sung by the talented Raman Mahadevan, was playing on Radio Zindagi 1170 AM Jiaja. You are listening to the Silicon Dreams with your host Shara. आपको याद दिला दूं कि ये नया शो है that's going to air every Monday from 3:30 PM to 4 PM on Radio Zindagi 1170 AM, and on the Silicon Dreams we are going to talk about innovation, entrepreneurship, and all things that impact entrepreneurs. By the way, startups के लिए एक और टर्म आपने सुना होगा, ventures. कभी सोचा है आपने why are startups also referred to as ventures? That's because the word entrepreneurship is rooted in the French word entrepreneur, which means to venture out. 18th-19th century में famous French economist Jean-Baptiste ने ये word coin किया था to refer to those adventurers who would venture out, take financial risks to set up their own businesses and make a profit. In the world of business and entrepreneurship, money is definitely one of the key focuses for any entrepreneur, if not the only focus. जब भी आप किसी भी investor के पास जाते हो किसी भी business के लिए, वो ये तो जानना चाहेगा ही कि आपके idea में दम है क्या, but at the same time he's also interested in learning what is the return of investment. जब भी आप कोई भी business plan present करते हैं या फिर किसी भी investor के सामने pitching करते हैं, it is important that you articulate your idea and how it stands out from the competitors in that pitch, but at the same time the investors are also looking for numbers. अब हर entrepreneur को ये तो लगता ही है कि उसका जो idea है वो mind blowing है, लेकिन एक investor हमेशा उस idea को एक cash cow की तरह evaluate करता है. The investor is always looking at how that idea can turn his 1x investment into 10x returns or even more. वो आपकी capital और financial assets देखेंगे, आपका debt ratio देखेंगे, ये देखेंगे कि आप already कितने का business कर रहे हैं, वो ये भी देखेंगे कि आप equity उनको कैसे offer कर रहे हो, whether it is through safe notes, convertible notes, and they will evaluate your startup to see what that equity could be worth over a certain period of time. अगर इनमें से कोई भी terms and phrases आपके सर के ऊपर से bouncer गए हैं, तो worry not,
ट्यून कीजिए रेडियो जिंदगी 1170 AM पर every Monday from 3:30 PM to 4 PM with me Shara and together we will talk about our silicon dreams. बातें होगी सपनों की, आइडियाज की, एंटरप्रेन्योरशिप की और बातें होगी पैसों की। चलिए इसी मौके पे सुनते हैं हमारा अगला गाना रेडियो जिंदगी 1170 AM पर। ब्लफ मास्टर मूवी का ये गाना आप सुन रहे थे रेडियो जिंदगी 1170 AM पर। इस गाने में महमूद ने तो ये बड़ा सही कहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब बात पैसों की शुरू है तो दिमाग में ये एक सवाल भी उठता है कि ऐसे पैसे डाल के प्रॉफिट बनाने वाले को बिजनेसमैन भी तो बोलते हैं, तो आजकल ये वर्ड एंटरप्रेन्योर इतनी पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रहा है? बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में कोई फर्क भी है या लोग बस इसे इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट साउंड्स वेरी फैंसी कि भाई मैं तो खुद को बिजनेसमैन बोल बोल के थक गया हूँ, चलो लेट मी स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर नाउ। बेशक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, but as you start getting into the entrepreneurial community, which is comprised of startups, unicorns, enterprises, VCs, angel investors, you will see a common pattern of differences being pointed out between these two words. The first factor differentiating a businessman from an entrepreneur is the originality of the idea. मतलब लोगों का ये कहना है कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो मार्केट से ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज उठाकर उसी को स्पिन ऑफ करके अपना बिजनेस लॉन्च करता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कुछ तो इनोवेटिव सोचता है। एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन गोज टेक्स अ रिस्क विद दैट बिजनेस एंड लॉन्चेस हिज और हर बिजनेस। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो लेट्स अज्यूम दैट आई लिव इन अ प्लेस इन द बे एरिया वेयर देयर इज नो इंडियन रेस्टोरेंट विद इन 5 miles ऑफ वेयर आई लिव। मतलब अभी ऐसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर तो हर दूसरा रेस्टोरेंट एक इंडियन रेस्टोरेंट होता है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स से मैं ऐसी किसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पर देसी तो भर भर के है लेकिन आसपास में कहीं पे एक देसी रेस्टोरेंट नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स व्हाट आई कुड डू इज लॉन्च अ देसी रेस्टोरेंट देयर इफ आई हैव द राइट अमाउंट ऑफ फंडिंग। In the menu though, I will serve the same old dishes that have withstood the trials of time. Butter chicken, chicken tikka masala, paneer makhni, so on and so forth. अब ऐसा नहीं है कि ये सर्व करने से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। I could serve absolutely good food and I will have the restaurant packed to its capacity on weekdays and weeknights, but that will make me a good businesswoman because I am making a profit, but I'm not necessarily doing something innovative. But instead of the traditional menu, if I used molecular gastronomy to present dishes on the table that didn't just appeal to your taste palette, but they appeal to all your senses, now I'm doing something different, something innovative, and I could go ahead and call myself an entrepreneur. तो एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच के डिफरेंसेस की ये बातचीत हम शुरू रखेंगे इस अगले गाने के बाद हियर ऑन द सिलिकॉन ड्रीम्स एट रेडियो जिंदगी 1170 AM। जिए जा। सिंगर म्यूजिशियन सलीम मर्चेंट का ये गाना था रॉकेट सिंग सेल्समैन ऑफ द ईयर मूवी से। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग नॉट जस्ट बिकॉज इट हैज ऑसम लिरिक्स बट ऑल्सो बिकॉज इट प्लेज इन द मूवी एट एन ऑपर्चुन टाइम। ये गाना तब बजता है जब रॉकेट सिंह अपना बिजनेस अपने कंपेटिटर को बेच देता है। अब बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं बट द सॉन्ग टॉक्स अबाउट हाउ यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड कीप फ्लाइंग हायर एंड हायर। You just need to believe in yourself, hold your head up high and keep marching forward. अब बस कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे द सिलिकॉन ड्रीम्स पर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। सो द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी स्पोक अबाउट वाज हाउ यू हैव अ हायर क्लेम टू द वर्ड एंटरप्रेन्योर इफ योर बिजनेस इज बेस्ड ऑन एन ओरिजिनल आइडिया। लेकिन फिर भी बस अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलाने के लिए पीपल डोंट गो एंड इन्वेस्ट मनी इन एवरी ओरिजिनल आइडिया दैट कम्स टू देयर माइंड। And why is that? Well, that brings us to our second difference between businessman and entrepreneur, which is about the risk taken. So traditionally, businessmen look for opportunities in the market that have already been tried out by someone else, and then they replicate the same business model with perhaps a few tweaks here and there. But overall, this reduces the risk because that idea has already been proven in the market.
On the other hand, entrepreneurs go in with an original idea. Of course, with MVPs, which stands for minimum viable products, they go out into the market to get some early validation. लेकिन फिर भी रिस्क तो बड़ा होता ही है क्योंकि sometimes those ideas are completely new, एकदम novel ideas होते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा. Which is why the risk taken by entrepreneurs is considered to be generally higher than the risks that are shouldered by businessmen. And that is exactly the reason why people expect 1x investment to turn into 10x returns, because we all know higher the risk, higher the return. लेकिन कभी कभी ये रिस्क बनकर ही रह जाता है without returning any profit at all. और ये बात स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को और इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से पता है that not every startup has a success story. हर स्टार्टअप एक्सपीरियंस से आपको सीखने जरूर मिलता है लेकिन पैसा सबसे नहीं मिलता. But for those dreaming the silicon dreams, a failed startup does not deter them. Rather, it becomes a learning opportunity for their next big idea. आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1170 AM आरजे शारा के साथ और हमारी ये बातचीत हम शुरू रखेंगे लेकिन इस गाने के बाद. चक दे इंडिया का ये गाना needs no introduction. You were listening to it on The Silicon Dreams here at Radio Zindagi 1170 AM. मैं हूँ शारा और हमारा बातें कर रहे थे कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि अगर आपका आइडिया ओरिजिनल है then that furthers your claim to the word entrepreneur. फिर हमने ये कहा कि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं because you have an original idea, then again you can make claim to the word entrepreneur. Now while there are many other subtle differences that people like to point out, one of the third key differences that folks speak about is the passion to drive their business and ideas. मतलब कुछ entrepreneurs तो एकदम mad scientist की तरह होते हैं. A prime example of this is the CEO of the world's most valuable automobile company. Yes, I'm talking about Elon Musk. He's passionate, fearless, a brilliant executioner, but hey, he speaks without any filters. And people believe in him. They say that the Tesla stock has a Musk premium associated with it, which means that the stock is so highly valued because it is being led by Elon Musk. अगर आप stock market पर थोड़ी सी भी नजर रखते हो तो आपने ये तो जरूर notice किया होगा how Tesla stock went from $400 to touching about $1,000 within a couple of weeks. So then are businessmen and entrepreneurs mutually exclusive? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. Businessmen should have the traits of an entrepreneur should have the traits of a businessman. After all, you have to balance your risks well. You have to take some calculated risk, but at the same time, you have to keep thinking out of the box to get to the next level. Now, while some people might be good businessmen and excellent entrepreneurs, there are times when people are either just shrewd businessmen or they are very skilled innovators and entrepreneurs. And if you're one or the other, this is exactly the reason for you to go look for a compatible co-founder. In fact, when you go out and ask for investments, investors are looking for that well-rounded of A-team, the winning team, where the members of that winning team complement each other well. So coffee, conversations, ideas, and innovations, we'll keep this momentum going every Monday from 3:30 p.m. to 4 p.m. on The Silicon Dreams, right here at Radio Zindagi 1170 AM. GA Ja. This is your host Shara, signing off.